Good evening and warm welcome of everybody to a very special edition of our sector-specific webinar. I'm Shrikant Chauhan from Equity Research of Kotak Securities, and joining me today is our speaker for the day, Mr. Arun Agarwal, Deputy Vice President with PCG Research of Kotak Securities, has around 17 years of experience and is covering multiple sectors, including automobiles. To introduce Arun, he has been with Kotak Securities since 2010 and is currently the lead auto, building materials and consumer durables analyst in our research team. He is a MBA from Mumbai University and have total 17 years of experience in the market. He has established good relationship with large corporate clients through his exceptional financial expertise and communication skill. Today we are going to discuss on the auto sector, and it is a dynamic industry, and almost all the promoters have very strong track record. Every time they have to be on their toes. Every month they have to report auto sale numbers, which keep the industry highly active. Inflation is the biggest concern for the industry, but as promoters have deep experience, they eventually manages to overcome on it. Today, my colleague Mr. Arun will explain the sector in short but in powerful words. So please pay attention. Over to Arun. Thank you, Shrikant. We welcome you all today to our sector webinar on the auto industry. Today's structure would be wherein we will talk about the different segments in the auto industry. We'll talk a little bit about the history for the benefit of everyone. We'll also talk about what are the current challenges there for the auto sector and how do we feel the future would be for the sector, and which are the stocks we like in the space and why. Starting with, just hold on, we'll just have to. Yeah. So if you look at the auto sector per se is pretty critical for the economy of the country, for our economy. That's largely because of multiple reasons. One is because it generates a lot of employment. The second, it contributes significantly to your significantly to the taxation system as well. Thirdly, it encourages FDIs, and also we have got good export revenues coming in from exports of autos and auto components. So from that perspective, the overall auto sector is pretty significant for our economy. Now, moving forward, what we'll do is we'll start initially now with the two-wheeler segment, and you can see on the screen the two-wheeler industry domestic sales volume are given there. ये डेटा FY15 से लेके FY21 तक का डेटा है आपके सामने. इसमें आप देखेंगे तो FY20 और FY21 में इंडस्ट्री में काफी शार्प डिक्लाइन आई थी. कुछ 18% डिक्लाइन FY20 के आसपास थी और FY21 में कुछ 13% वॉल्यूम डिक्लाइन आई थी. उसके पहले भी आप देखेंगे FY15 से 19 में हालांकि इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है, बट ग्रोथ काफी स्लो रही है. अगर हम लास्ट 7 साल की बात करें FY15 से लेके FY21 तक, उसमें इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही ऐसा साल रहे हैं जहां पर इंडस्ट्री ने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखी. सो लास्ट पूरे डेकेड में देखेंगे तो इंडस्ट्री की वॉल्यूम ग्रोथ काफी लो रही है टू व्हीलर स्पेस में. बट वी बिलीव दिस टू बी अ गुड लो बेस. अभी जो काफी लो बेस बन गया है, यहाँ से इंडस्ट्री वॉल्यूम गोइंग अहेड कैन एक्चुअली डू प्रीटी वेल गोइंग फॉरवर्ड. इनमें मल्टीपल रीजंस रहे हैं. लास्ट 2 साल में इंडस्ट्री वॉल्यूम इसलिए कम हुई है बिकॉज जो व्हीकल की कॉस्ट है वो काफी बढ़ गए हैं लास्ट 2-3 सालों में. एक हुआ था कि BS4 से हम BS6 में आए हैं, तो उसके वजह से ये टू व्हीलर के कॉस्ट काफी बढ़ गए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट, कमोडिटी प्राइसेस हमने देखा है कि बहुत इंक्रीज हुई है. मेटल प्राइस में बहुत बड़ी रैली आई है, तो वहाँ बिकॉज कंपनीज पास ऑन करती है कस्टमर्स को, तो इसके वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं. तीसरा, वॉल्यूम का इम्पैक्ट कोविड के वजह से भी रहा है बिकॉज 2 बहुत बड़ी वेव्स हमने देखी है कोविड की, उसके वजह से भी वॉल्यूम में इम्पैक्ट आया था. अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़ा रिसेंट
थोड़ा रिसेंट मंथ्स की बात करें तो वहां पर व्हाट वी आर सीइंग कि फ्यूल प्राइसेस थोड़े इंक्रीज हुए हैं बिकॉज क्रूड प्राइस काफी ऊपर है, और उसके अलावा रूरल में भी थोड़ा हम रिसेंट टाइम्स में थोड़ा स्लो डाउन देख रहे हैं, तो उसके वजह से भी थोड़ा इंडस्ट्री अभी वीक है। FY22 में भी लग रहा है कि इंडस्ट्री डिक्लाइन करेगी, सो फार जो नंबर्स आ रहे हैं वो हिसाब से, बट गोइंग फॉरवर्ड वी बिलीव FY23 एंड FY24 में हमें लग रहा है कि इंडस्ट्री वुड डू वेल। इंडस्ट्री में हम रिकवरी देख रहे हैं, एक ग्रेजुअल रिकवरी देखेंगे। नियर टर्म थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा प्रेशर्स है बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस अभी वापस से दोबारा रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ी है, बट उसके बाद हम आगे देखें धीरे धीरे जैसे रूरल में रिकवरी आएगी और ओवरऑल डिमांड इंप्रूव होगा, आई थिंक मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे एंड कंपनीज शुड स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर इन द टू व्हीलर स्पेस। नेक्स्ट स्लाइड हम। Now this chart shows कि टू व्हीलर इंडस्ट्री में स्कूटर्स, मोटरसाइकिल और मोपेड्स के मिक्स कैसे रहे हैं। अगर आप FY10 में देखें तो अराउंड 78% आपकी जो वॉल्यूम आती थी वो मोटरसाइकिल्स में आती थी, यानी आप ये समझिए कि 100 जो टू व्हीलर्स बिकते थे, आउट ऑफ दैट 78 वर मोटरसाइकिल्स, अराउंड 16 वर स्कूटर्स, 15 to 16 वर स्कूटर्स एंड रेस्ट वर मोपेड्स। Till if you go to FY16, स्कूटर्स इंक्रीज फ्रॉम ऑलमोस्ट 15-16 to 30-32% का उनका स्टेक इंक्रीज हो गया है। मोटरसाइकिल्स केम डाउन बिकॉज स्कूटर्स की काफी अच्छी ग्रोथ वो पीरियड में रही है, बट अगर हम इफ यू लुक एट द लास्ट 5 years नाउ, स्कूटर्स का जो शेयर है ओवरऑल मिक्स में हैव बीन बिट स्टेबल, मोटरसाइकिल्स का भी काफी स्टेबल रहा है। वी हैव नॉट सीन अ मैसिव फ्रॉम लास्ट 5 years in the mix, in the two wheeler mix in favor of any of the segments. Now why this chart is important is because every player has got their own strengths. Like आप देखेंगे टू व्हीलर में आप देखेंगे तो मोटरसाइकिल में हीरो मोटो का काफी स्ट्रॉन्ग है डोमेस्टिक साइड पे, स्कूटर्स में होंडा मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया जो HMSI है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी FY10 से 16 में जब भी स्कूटर्स की वॉल्यूम्स बहुत बड़ी थी तो होंडा मोटरसाइकिल्स डिड वेल, एंड अकॉर्डिंगली जो कंपोनेंट प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो स्कूटर्स में पार्ट सप्लाई करते, दे ऑल्सो वुड हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ दिस। नाउ गोइंग अहेड ब्रॉडली फिलहाल लास्ट 4-5 साल में हमने बहुत ज्यादा मिक्स में चेंज नहीं देखा है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल आने की वजह से हो सकता है कि स्कूटर साइड में हम फिर से थोड़ी सी मिक्स में चेंजेस देख सकते हैं। नाउ दिस इज द मार्केट शेयर डेटा। इंडस्ट्री में वैसे तो काफी प्लेयर्स हैं, बट इनमें 4 प्लेयर्स जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं, दे अकाउंट फॉर नियरली 90% ऑफ द डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम। ये FY21 का डेटा है ऑरेंज में जो है। इसमें आप देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, बजाज एंड TVS, दे टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन 90%। रॉयल एनफील्ड इज देयर विद अराउंड 4% मार्केट शेयर। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके अराउंड सिंगल डिजिट में मार्केट शेयर। जो कि मैंने आपसे लास्ट चार्ट में भी बताया था कि FY9 से 16 में वी सॉ मार्केट शेयर शिफ्टेड सिग्निफिकेंटली इन फेवर ऑफ HMSI बिकॉज दे वर प्रीटी स्ट्रॉन्ग इन स्कूटर्स एंड डिमांड फॉर स्कूटर्स वाज ग्रोइंग एट अ प्रीटी हाई रेट एज कंपेयर्ड टू मोटरसाइकिल। So HMSI का मार्केट शेयर काफी बढ़ गया था। हीरो डिड लूज सम मार्केट शेयर इन दैट पीरियड, बट इफ आई लुक एट द लास्ट 5 years देयर आर सम मार्केट शेयर चेंजेस बट नॉट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। तो आप देखिए हीरो का थोड़ा कम हुआ है, होंडा का थोड़ा बढ़ा है वहां पे, और TVS ने भी थोड़ा मार्केट शेयर वहां पे बढ़ाया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now this is a three-wheeler industry. Now the reason we are talking about three-wheeler industry along with the two-wheeler is because जो बजाज ऑटो है और TVS मोटर है, they also have three-wheeler businesses in their portfolios. तो three-wheeler industry relatively आप देखिए FY11 से FY17 में they have done काफी stagnant था इंडस्ट्री, काफी broadly stagnant था, but फिर हमने 18 और 19 में अच्छी ग्रोथ देखी इंडस्ट्री में, and then 20 में we saw a decline and FY21 was very very weak for the industry because of COVID. Now with economy reopening, three-wheeler demand has started to pick up, and with a very very low base, we believe the industry will do well in the coming period. अगर हम देखें इसमें थोड़ा बहुत फायदा बजाज को हो सकता है इसके वजह से, और TVS को बिकॉज उनके पोर्टफोलियो में थ्री व्हीलर है। The other pure play in the three-wheeler space is Atul है जो purely three-wheeler space में है। Next slide. Now the current situation in the two-wheeler industry domestic side is such where the volumes are weak right now because possibly थोड़ा rural में slow down है, and certain segments of the industry are also or have been impacted because of chip shortages as well. Last 2 years में two-wheeler के prices बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। मैंने आपको reasons बताए हैं उसके। Commodity prices currently are also sort of increased because of the Russia-Ukraine war, तो companies के margins थोड़ा near term में pressure में रहेंगे। But when we talk about medium to long term,
perspective, we are positive on the two-wheeler industry. As I told you, base बहुत कम है. So on this low base, we are expecting good recovery. For most of the two-wheeler players, we are expecting a good, healthy volume growth over in FY23 and FY24 as well. रूरल डिमांड में रिकवरी आती है तो आपके रूरल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो रूरल में ज्यादा चलते हैं, वो चलेंगे. आप इसमें हीरो मोटोकॉर्प का देखेंगे तो उनका प्रेजेंस रूरल साइड में थोड़ा ज्यादा है. सो व्हेनेवर वी सी रिकवरी इन रूरल डिमांड, वी कुड सी हीरो मोटोकॉर्प बेनिफिटिंग देयर. Because of COVID, we have seen preference have moved towards personal mobility and that would continue going ahead as well. और जैसे जैसे सप्लाई चेन में इंप्रूवमेंट आती है, जो हायर सीसी मोटरसाइकिल्स हैं जो कि इम्पैक्टेड रहे हैं सप्लाई चेन की वजह से, तो जैसे जैसे वहां पर इंप्रूवमेंट आएगी, वहां पर we'll see production numbers improve होंगे, and as production improves, sales will also improve. Now, we'll also talk about electric vehicles for the two-wheeler space. Now, electric vehicles, I think, is something which we hear so much over the last 1-2 years. EVs में देखेंगे तो टू व्हीलर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर EV में हम थोड़ा बहुत एक्टिविटीज देख रहे हैं. We have already seen a lot of new players which have come into the play in the two-wheeler side. Ola came out with their product a few months back. आप उनकी प्राइसिंग भी देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव प्राइस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, दो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस हैं अभी भी, बट आई थिंक all the players, including the new ones and the existing ones, are already working on getting their products in the electric vehicle space. तो अगले 1 to 2 years में we are expecting new products आप launches देखेंगे कंपनीज की तरफ से next 1 to 2 years में EV space में. यहाँ पर हम challenges की बात करें तो challenges ये है इसमें कि competition increase हो जाएगा existing players के लिए. As I told you, around 4 players hold around 89-90% market share. तो आप थोड़ा competitive pressure वहाँ बढ़ जाएगा. Secondly, previous slide थोड़ा competition बढ़ जाएगा वहाँ पे. और जनरली आप देखेंगे टू वे प्लेयर्स की अगर आप बैलेंस शीट देखिए और उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, P&L अकाउंट देखेंगे, तो उनके मार्जिन्स काफी अच्छे रहते हैं, कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग होता है, ROEs बिजनेस में बहुत अच्छे हैं. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इफ न्यू प्लेयर्स कम एंड ब्रिंग देयर प्रोडक्ट्स एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस. वो एक चीज है जिस वेयर वी हैव टू कीप एन आई ऑन, अ वॉच ऑन. अपॉर्चुनिटीज में आप देखेंगे तो आई थिंक टू व्हीलर में अभी होंडा मोटरसाइकिल 50% मार्केट शेयर 50% के आसपास उनका मार्केट शेयर है. Hero Motocorp has got low market share, so if they are able to get good products, they can do well in EVs. Similarly, Bajaj was not there in scooter for a long time. They came with Chetak, and if they are able to get good products in the market, so they would be able to improve their or increase their market share in the overall two-wheeler domestic industry. And similar is the case even with TVS Motors. So I think opportunities are there for the existing players. In terms of competition, I think Eicher Motors में हम फिलहाल EV ज़्यादा impact नहीं देख रहे हैं फिलहाल. At least at this point in time, we're not seeing much impact, and I think the competition is more on the scooter side and maybe 100-150 cc kind of vehicle space there. Next. Now we move on to the passenger vehicle industry. Now the domestic passenger vehicle industry, आप FY21 में देखें, 20 में उनके वॉल्यूम्स गिरे थे, इवन 21 में वॉल्यूम्स सॉ मार्जिनल डिक्लाइन. नाउ FY21 के जो वॉल्यूम्स हैं इंडस्ट्री के, दे वर लोअर इवन व्हेन वी कंपेयर विद FY16 के वॉल्यूम्स में. सो वी आर नॉट सीन अ वेरी हाई ग्रोथ ओवर FY16 to 19, बट वी सॉ एक्चुअली अ स्टीप डिक्लाइन इन FY20, जिसके वजह से वॉल्यूम्स of FY21 has been more or less similar to what they were in FY16. इसमें आप देखेंगे Maruti is a clear market leader there. Then we have got other players like Hyundai, which also has good market share. The industry declined in FY20, and even we saw a decline in FY21. और हम FY22 में भी थोड़ा प्रेशर देख रहे हैं because of semiconductor issue के वजह से ज़्यादा. So demand of FY21-22 is more to do with semiconductor issue. We are seeing shortages. If you recall, few months back, we were seeing companies reporting very low volumes because challenges थे उन्हें semiconductors के लिए. So as we see the situation improving in semiconductors, we would see a good growth coming in the passenger vehicle space. Next slide. Now this is, a chart. I wouldn't say identical to what we saw in the two-wheeler space where we talked about scooters and motorcycle mix. But if you look here, this is something how last 10 years में अलग-अलग products की demand किस तरह change हुई है industry में. तो आप सेडान का आप शेयर देखें कि सेडान का शेयर्स कम हो गए हैं, हैचबैक्स के शेयर्स कम मार्केट मिक्स में कम हो गया है. Compact SUV is one segment which has done very well in the market. So जिन companies ने ये space में products launch किए हैं, they have actually done pretty well in the market in terms of market share gains.
large SUVs और MPVs में बहुत changes नहीं हुए market share में last 10 years में. So they broadly have been able to maintain those, shares in the overall segment mix in the passenger vehicle industry. So यहाँ पर ये slide इसलिए important होता है कि because players, as I told you, who have been launching, and if this compact SUV segment continues to grow, then new product launches in this segment will help or support market share gains for players. Next slide. Now this is the market share data where FY12 से आप FY20 में देखेंगे तो मारुति ने काफी मार्केट शेयर गेन किया था. उन्होंने काफी सारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस किए थे मार्केट में. उन्होंने नेक्सा का कंसेप्ट भी लेके आए थे मार्केट में, and they have done pretty well there. But last 2 years में, if you look, they have actually sort of lost some market share. Now one of the reasons is because competition has increased significantly. The other being they have also faced semiconductor issues. Even other players face, but मारुति को भी काफी बैक रहा था semiconductor shortage का issue का. The third is कि product launches में हम थोड़ा weakness देख रहे हैं मारुति की तरफ से. At least आप last 1 to 2 years में देखें, especially compact SUV side में, as we saw, काफी strong demand रहा है. There we have not seen much products coming in from Maruti. So as and when we see some products coming in from Maruti in that space, that should help them gain some market share back to the Tata Motors का आप देखेंगे तो FY12 से FY20 में they lost significant market share, but last 2 years में they have gained a lot of market share because new products have done pretty well in the market for them. Next slide. If you look at passenger vehicle industry का current situation देखें हम तो semiconductor की जो situation है वो काफी dynamic है. इसका impact अलग-अलग place के ऊपर अलग-अलग है, depending उनकी sourcing कहाँ पर है, उनकी product portfolios कैसे हैं. मारुति के लिए हम देख रहे हैं काफी stable numbers आ रहे हैं, but I think overall for the industry, not even in India, I'm saying even globally, as we see the semiconductor situation improving, the supply is improving, I think the performance or the volume numbers should go up. Now, the reason why we are saying so is because a lot of these companies are having good, strong order book. So as we see more production, supply chain इनकी ease out होती है, तो productions improve होंगे, and there the sales will also improve. Crude oil prices थोड़ा high हैं. Recently, last 1 month में काफी prices increase हुए हैं crude oil prices के, so ये एक थोड़ा short term negative demand dampener है. But I think overall, given the strong order book, the industry should ideally be doing well, depending how the chip shortage situation gets handled. Competitive intensity has increased. We talked about how we are seeing a lot of new product getting launched and also new players coming into the market, like Kia Motors आया है, then MG India में आए हैं. So there are a couple of new players which have come in and competitive. We have seen good product launches from their end, and the competitive intensity has increased. Electric vehicle space में देखें तो unlike two-wheelers, we are also seeing activity here also. Not that we are not seeing any activity on the EV space, but right now the base बहुत छोटा है EVs का. The number of products in the market for EVs are also very low right now. Companies, I think I was reading some article even today only, I देख रहा था कि there are talks about getting affordable EVs. So as we go ahead over the next 2 to 3 years, we'll see new product coming in from a lot of existing players in the EV space, and जैसे products affordable होंगे, I think the demand will also pick up, and hopefully the infrastructure will also grow from where we are today on the EV side. Next. Now, commercial vehicle industry is a highly cyclical industry. आप चार्ट में से देख के आप समझ जाएंगे. आप FY10 से FY12 तक देखें तो industry was growing. Then FY12 से even FY13 तक, then FY13 से आप FY14 और 15 का 2 साल देखें तो इंडस्ट्री में काफी degrowth रही है. From FY15 to FY19, 5 years, industry again showed a growth. FY20 and FY21 saw a significant decline. When I say significant, CV industry के volume जो FY21 में रहे हैं, I think they were the सबसे कम रहे हैं last 10 years के volumes में. काफी CV industry is generally a very, very cyclical, as I told you, depending upon the current economic activities, economy कैसा कर रहा है उस पर depend करता है. Then fleet utilizations कैसे हैं existing economy में. Depending on these, I think overall the CV industry remains a bit on the cyclical side. Next slide.
Now, within the CV industry, we broadly classify them into LCVs, light commercial vehicle, and the other is MHCV, which is medium and heavy commercial vehicle. So, medium and heavy is basically the bade trucks, large size trucks, and tractor trailers. MHCV industry is far more cyclical within the CV space. The declines आप देखेंगे when I talked about CV industry decline, I think I was the industry declined by around say 29% I think in FY20. वही साल MHCV industry का decline was almost 42%. And similarly FY21 when the industry declined, CV industry declined by 21%, MHCV industry within that declined by around 29%. So declines in MHCV industry has been relatively sharper over the years, or the growth also has been sharper as compared to the LCV industry. Again, yeah, FY15 to 19, that was the last upcycle. FY2021 we saw a degrowth, and now we are seeing industry picking back. Now the volumes in FY21 are at multi-year low. अगर आप chart देखेंगे आपको समझ जाएगा FY21 के volumes are the least that we are seeing since FY10. So the industry volumes at least last 10-12 years में has been the least in FY21. FY21 में we are seeing growth, and we believe this growth will continue going ahead. And this industry would see, if the economy continues to recover and there are no major black swan events, I think the CV industry and the MHCV within that should ideally be doing well and growing at a pretty high growth rates over the next couple of years. Next slide. We have already discussed this. The CV industry volumes are significantly lower from the previous highs. CV industry volumes so far this 9 months का हम डेटा देखें तो काफी अच्छा ग्रोथ हुआ इंडस्ट्री में. अभी जो crude oil prices have increased, and if the diesel prices also increase going ahead because of this, then that could impact the fleet operators' profitability. Now, fleet operator की profitability अगर impact होगी तो that might impact demand for trucks. So that's something we have to watch. So there could be a near-term hiccup here because of the current event that's going on globally here because of global events. But otherwise, from medium to long-term perspective, we believe that the CV industry should see a good growth. So as we talked about, we are positive on medium to long-term growth prospect, which would primarily should be led by economic activity. Now, lastly, we'll cover the tractor segment. Again, the tractor segment is also a bit slightly cyclical, depending upon, the performance depends on multiple factors here, farm income, how the monsoon spans out every year, amongst others. So FY21, we saw a very, very good growth where volumes increased by 27% for the industry. COVID, when we saw the entire segments in the auto space, any other segments struggling, I think tractor was one of the rare segments that actually was showing good growth even in those challenging times. However, because base काफी last year increase हो गया है और rural में थोड़ा सा slowdown है, and there were some other factors as well because of monsoons. Last year के monsoons काफी unseasonal rains रहे थे, उसके वजह से भी I think overall FY22 में right now we are seeing weakness in tractor volumes, which may continue in the near term. But medium term again, we are positive and expect the tractor industry to show growth. Next slide. The near-term challenges we talked about the tractor industry. One is the late monsoon rains last time around, and the impact that these kind of events have on the crops and the harvest. The base was also pretty high, and the commodity inflation is another part. We have seen, again, commodity prices have increased significantly. So ये pass on करने में आपके product prices काफी increase हो जाते हैं, and that also sometimes impact demand. So steep price hikes हुए हैं उसके वजह से, and farm input के अपने भी inflations होंगे. So these all factors are some challenges in the near term. But again, medium term outlook, we are positive. We are expecting gradual recovery to happen in this space. A good Rabi crop in FY22 should be positive for tractor demand. Base favorable hai if the industry is degrowing right now, so which makes the base a bit favorable for next year. And we're also looking forward to the monsoon forecast from IMD, which ideally should come going forward now, maybe in April. So overall, we are positive on tractor space, but near term there are some pressures and volumes could stay a bit subdued in the near term. Next slide. Now this is a valuation chart. Right now, we have a positive view on Ashok Leyland, Bajaj Auto, Mahindra and Mahindra and Tata Motors. In the two-wheeler space, we like Bajaj Auto. The reason being that electric vehicle is one concern we all have been talking about on the two-wheeler side. तो वहाँ पर आप देखेंगे तो Bajaj Auto का जो overall
revenue mix है वहां से 50% उनका exports है, 50% domestic है. Even in 50% we have some three-wheelers there, and they're not there in scooters. So we are talking about impact of EVs slightly more on scooters than on motorcycles. And then उनका जो product portfolio that's also skewed towards थोड़ा higher CC motorcycles में, and we are expecting the impact of EVs to maybe firstly come more on the 100cc 125cc segment, especially on the scooter side. So that the impact on, I think, Bajaj Auto from the EV side is relatively low as compared to other players, specifically players who are already pretty strong in the scooter side. Now, I think Bajaj Auto also has a good opportunity here to scale up and increase their market share by getting good products in the scooter side. As we talked about, they have a negligible presence in the scooter side, but if they're able to get some good products, they are working on the EV side, and we will see some products from their end, and accordingly, I think they should do well. Exports, they have been doing well. अभी थोड़ा near term challenges because of Russia-Ukraine war आए हैं, but I think exports overall is a good growth story for them going forward as well. Valuations are not very, very expensive. आप देखेंगे FY 2024 पे the stock is trading at 15 times KPE per trade हो रहा है, and we are looking at around 19% earnings growth in FY 23 and 14% next year as well. So overall, I think this is in the two-wheeler space we like Bajaj Auto. TVS Motors, Eicher Motors are close to our target prices right now, and maybe if the stock corrects from these levels, maybe we could turn positive then. But right now we believe, are trading at full valuations. Hero MotoCorp has corrected from our last update, and the stock again is available at a pretty reasonable valuations. You can say it's only available at 11 times on FY 24 numbers. But one thing what we need to watch in Hero MotoCorp, that there is a slowdown in the rural space, what we are seeing, and that hurts Hero MotoCorp slightly more than its peers. So if we see recovery in the rural space in terms of demand, Hero MotoCorp ideally should see some impact or benefit out of that. Now coming on to on Maruti, we have a sell rating right now because we believe the valuations are full at this point in time. The company has lost some market share in the recent times, and the margins, if you look at उनका 4-5 years पहले के margins देखें, वहाँ से the margins are significantly lower right now. Though the margins will improve with higher volumes, order book are good, order book अच्छी है उनकी. And I think new launches के announcement में stock could see some near term आप में momentum देख सकते हैं. It's if there's some new launches or announced by the company, but otherwise I think at this point in time the stock is fairly valued, and थोड़ा commodity inflation का भी pressure रहेगा उनके ऊपर. Tata Motors, we are a buy. Stock has been volatile and will continue to stay a bit volatile because they operate both in domestic market, in export, in overseas geographies as well. JLR may get impacted because of Russia-Ukraine war, the impact of that on Europe, demand both in Europe, US and other geographies. Supply chain issues can be there. Domestic side पर Tata Motors has done pretty well in the CV space. Commercial vehicle में we talked about how we are looking at industry growing pretty well, and passenger vehicle also they have gained market share. So the domestic side they have been doing pretty well, but then commodity inflation will continue to hurt all the auto players in the near term if the price of commodities continue to stay high. Mahindra & Mahindra is again a buy. Stock is available at very attractive valuations. The tractor industry may be a bit slow, but anyways, the overall balance sheet and the cash flow position of the company remains strong. The company is doing good in the auto space, and overall, we are positive on Mahindra & Mahindra. So that's it from my end. Over to Rini. Thank you, Arun, for such a detailed and insightful presentation on the auto sector. And thank you, dear participants, for being patient. I see we have quite a few live questions for Arun already. Guys, we will try and answer as many questions as possible. Stay with us, as apart from auto space, our team also has 5 more stock ideas for you. Arun, what do you say before we move on to that? Let's first address some live queries from auto sector. Sure. Yeah. So one of the participants says, excellent presentation to you, and is asking to explain how strong M&M is in terms of technicals and fundamentals. Well, I can talk on the fundamentals if Shrikant wants to give something there apart from that. See, M&M we talked about, we do like the stock. We have a buy rating, and we have a target of 1180 on the stock. That's a 12-month price target that we have currently on the stock.
the company का जो valuations है, that it gets divided into three different parts. One is the tractor business, the other is the auto business, and third is the subsidiary stake that they have, the investments that they have in other Mahindra Group companies. So tractor में आप देखेंगे, yes, there is a slowdown company का, but anyways they have 40% market share, they are market leader. और industry में maybe near term थोड़ा challenging है tractor volumes के लिए, but I think industry should do well going ahead. We'll also await how the monsoons pans out और IMD monsoons पे क्या कहते हैं. Auto side we are seeing good traction. आप उनके new product देखेंगे तो they have done relatively well in the market now. उनकी order book भी काफी strong है auto side में. They are talking about a lot of launches on the light commercial vehicle as well. So auto space is one where they should be doing well. Valuation I've already talked about. They are very, very attractive, not at all expensive. Coffee inexpensive valuations in Mahindra. So I think it's something we can hold for a long-term period, and we really don't see a lot of downside to, given that the valuations are not very expensive in Mahindra. Okay. Next question is, please share your outlook on auto component space. See, auto component space में, the component space is very, very large. You have multiple plays. Like आप tire space देखेंगे, tire space में आप देखेंगे तो stocks काफी attractive valuation से आपको मिल रहे होंगे. But we should understand कि काफी challenges है अभी, because crude prices काफी ऊपर है. Crude इनका key raw material. Battery space में we have been not been very, very positive for some time now, because we think there are challenges to them. Within that, I think in the auto comps we like Minda Industries. एक वो stock है जो हमें पसंद है, Minda Industries है. And the other stock we had liked in the past was Sona BLW, but the stock actually ran up and is now close to a target price. But stock niche aayega, we can have a relook at that stock. But for the time being, I think we like Minda Industries in the auto component space. Thank you, Arun. Moving on, I would now like to invite Hemali to explain her stock from the BFSI space. From BFSI space is HDFC Bank, and we have a target of 1740. We have a buy on the stock. RBI has recently lifted all restrictions under business generation under Digital 2.0 for the bank. It had earlier withdrawn restrictions over issue of new credit cards. Now, since the lifting of ban on credit cards, we have seen that the bank has been able to stem the decline in market share and has also witnessed improvement in business momentum. We expect the same sort of a momentum or a trend line to follow now as well. Excluding this, the bank has been performing well on all of its other metrics. We have seen that the bank gives the best-in-class return ratios and asset quality. We also expect some room in revision or reversal in credit cost going forward. The new cohorts that the bank has acquired post-COVID are of high-quality borrowers, and we therefore see lower risk from them. The bank has a really strong customer franchise, and we expect a very successful execution strategy in retail. As we mentioned, we don't particularly have concerns on the asset quality front, especially as COVID is behind us. Thank you, Hemali. I now request Jatin to talk about his top stock pick. So, thank you, Rini. So on the top stock on the metal front, definitely in the recent past, we have seen the metal prices has gone up substantially higher because of the Russia invasion of Ukraine. But yes, that has taken the metal prices higher to a level of 60,000, 70,000 per ton on a different product level. But at the same time, we have cost increased substantially for energy coal, or for that matter, if you take a coking coal as well. And even the fuel cost has gone up, resulting into higher logistics front. But having said that, we believe that yes, given the correction, or probably though the stock has gone up, but if the market corrects, and we might see a correction from the higher level with the Fed increase the rate tomorrow, or probably if there is a peace talk between Russia and Ukraine and there is a further supply coming on, we believe that JINDAL Steel and Power will be one of our preferred bet on the steel front with a target price of 600. As the current increase in the price of the long product, मतलब चलिया का जो price है वो flat products मतलब पत्रे से ज़्यादा है. Company का dependence on thermal coal is less compared to the other players in the market, and because of the जो ऑस्ट्रेलिया में उनकी subsidiary है in terms और मोजाम्बिक में वहां से उनका थोड़ा सा
कोकिंग कोल का इंटीग्रेशन है। तो हमारे हिसाब से लग रहा है कि प्राइस एंड वॉल्यूम टेलविंड्स will offset the cost. Bank has a very strong customer. Bank has a very strong customer franchise, and we expect to face. Hemali, can you go on mute? Yeah, thank you. तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग प्राइस और कंपनी का जो आने वाले समय में वॉल्यूम की बढ़ोतरी जो होगी वो कॉस्ट जो बढ़ा हुआ है वो उसको ऑफसेट कर लेगी। और दूसरा क्या, उनका जो कैपेक्स है, जो डिस्पाइट ग्रोथ कैपेक्स, हमें लग रहा है कि जेएसपीएल जो पहली कंपनी रहेगी वो FY23 के एंड तक नेट डेट फ्री हो जाएगी। और जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन उनका है विच विल प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, उसी चलते हमें दिख रहा है कि उनका जो फ्री कैश फ्लो यील्ड है वो 18 से 12% हो जाएगा FY22-23 में रहने की संभावना। और हमें ऐसा लग रहा है कि स्टॉक इज वेल पोज्ड फॉर री-रेटिंग विद अ स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट। और नेक्स्ट क्वार्टर के एंड तक हमें ये भी पता चल जाएगा कि उनका जो JPL का असेट सेल है विल बी ओवर बाय Q4 end, which will further increase the cash balance. So stronger balance sheet, higher FCF yield, and net debt-free target by end of FY23 augurs well for JSPL. So JINDAL Steel and Power is a buy with a target price of 600. Thank you. Jatin, since we are talking about metal stock, can you answer a question from our participant quickly? He is asking for metal sector outlook. So yes, I said कि अभी हमने जो metals में और probably we have seen the recovery in the metal stocks in last 15 days or a month. This is largely coming because of the higher prices. The higher prices is driven by the geopolitical tension. So definitely, if you look from the ferrous as well as non-ferrous, I'll probably put a non-ferrous on the upper end because aluminum में हमें deficit की cycle दिख रही है और वहाँ पे हमें काफी कंफर्ट है where we believe that हिंडाल्को is better placed. इसका now अगर आप फेरस की बात करते हो तो प्राइस तो बड़ी है बट साथ साथ कॉस्ट भी बड़ी है। कहीं ना कहीं आगे जाल के मतलब ये लेवल की जो कॉस्ट है या रियलाइजेशन है इट्स नॉट सस्टेनेबल फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम and we might see a somewhat reduction in the realization in the coming month in line with probably a decline in the cost of production as well. So on the ferrous, we still believe that Tata Steel and Jindal Steel and Power offers a risk reward favorable based on the current scenario, and every dip we believe that JSPL and Tata Steel is a buy. On the ferrous front and on the non-ferrous, it's the aluminum where we are quite comfortable. Thank you, Jatin. Now, before we proceed, I would like you all to know that all our target prices are for 12 months period. Guys, we have noted your questions down. Amit, questions coming for you on Jubilant Foodworks. We will take them up soon. Hang in there. Now, Pankaj, over to you for your stock idea. Thank you, Rini. So the next stock that I am discussing is Praj Industries. और इस स्टॉक पे हमारा टारगेट प्राइस है 430 और हमारा एड रेटिंग है और करंट लेवल से देखेंगे अगर तो अपसाइड करीबन 18% है। और प्राज इस करंट एनवायरनमेंट में काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्रूड प्राइसेस काफी बड़े हैं और ऐसे एनवायरनमेंट में सभी लोग क्लीन एनर्जी या बायो एनर्जी की बात कर रहे हैं। और प्राज जो है, प्राज इंडस्ट्रीज, दे आर इनटू द टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर क्लीन एंड बायो एनर्जी। So they provide bioenergy solution in 1G ethanol plant and 2G ethanol plant. उसके अलावा they are also doing lot of work for the future bioenergy segment. So अगर कंपनी का की रैशनल अगर हम देखें क्यों हमें अच्छा लगता है ये स्टॉक, बिकॉज इट्स अ की बेनिफिशियरी फ्रॉम द गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। सो गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो इथेनॉल ब्लेंडिंग उनका प्रोग्राम था उसको एडवांस किया है, फ्रॉम 2030 से 2025 कर दिया है। बाय दैट टाइम दे वांट टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो 100 लाइक 1 लीटर में करीबन 20% जो होगा वो इथेनॉल रहेगा, ऐसा बाय 2025 गवर्नमेंट ने टारगेट किया है। तो इसके लिए करीबन 1000 करोड़ लीटर की एडिशनल इथेनॉल कैपेसिटी सेटअप करनी पड़ेगी और उसके लिए प्राज काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर इसकी मार्केट शेयर देखें तो इसका मोर देन 65% मार्केट शेयर है इस सेगमेंट में। सो ये काफी बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है इन फ्यूचर। और अभी तक जो ऑर्डरिंग की बात करेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, अभी तक करीबन 30-35% ही ऑर्डरिंग हुई है। सो बैलेंस 60-65% ऑर्डरिंग नेक्स्ट 3 इयर्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
और इसके वजह से अगर आप कंपनी की ऑर्डर बुक देखेंगे वो काफी अच्छी ग्रो हुई है। और अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने 950 करोड़ का ऑर्डर ऐड किया है जो एक क्वार्टर में, और इनका ऑर्डर बुक जो अभी ग्रो होकर करीबन 2600 करोड़ हो गया है। तो इट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट इट वाज 1.5 years back. So there is a quite strong performance which is given by the company in terms of order intake, and even outlook also seems to be quite strong, because future में भी अगर देखें तो their company जो है वो डीजल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा they are also working on CBG technologies which is going to be a very high opportunity in future. तो इस तरह से फ्यूचर में भी काफी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने काफी अच्छा ग्रो किया है, 68% से रेवेन्यू ग्रो किया है एंड करीबन 32% से अर्निंग्स ग्रो किया है इन Q3, एंड आने वाले क्वार्टर में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। अगर हमारा एक्सपेक्टेशन देखेंगे तो हम नेक्स्ट 2 years में मोर देन 30% अर्निंग्स का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग एट 24 times on FY24 earnings, and we have ad rating on the stock, and we have a target price of 430 that is based at on 28 times on FY24 earnings. तो अगर इसको आप कंपेयर करेंगे विजा पीयर्स तो थर्मैक्स इज ट्रेडिंग एट से 33 times on FY24, Siemens is around 44 times, or ABB is 50 times. So these may not be the exact peers, but they are very strong in the capital goods name as well. So on Praj, we are very much positive, and we have ad rating, and we have a target price of 430. Over to Rini. Thank you, Pankaj. Now I call upon our pharma analyst Purvi to talk about her views on Aster DM Healthcare. Thank you, Rini. Good evening, everyone. तो आज का हमारा स्टॉक पिक है Aster DM Healthcare from the hospital segment. So इससे पहले कि हम लोग इसके ऊपर कुछ बात करें, I'd just like to tell that we have an attractive rating on this sector. The reason being कि जैसे जैसे इकोनॉमीज नॉर्मल होना शुरू करेंगी तो इलेक्टिव सर्जरीज जो अब तक पेशेंट्स ने अवॉइड करी थी दे विल स्टार्ट कमिंग बैक टू द हॉस्पिटल्स. सो एज वी नो कि लास्ट टाइम हम लोग ने अपोलो हॉस्पिटल्स बताया था, तो इस बार हम लोग एस्टर डीएम हेल्थ केयर बता रहे हैं बिकॉज ये कंपनी भी, इफ आई हैव टू टेल यू अ लिटिल बैकग्राउंड, इट इज एन इंडियन कंपनी बेस्ड आउट ऑफ केरला, and it has its major operations in Middle East and India. So why we are saying is that this company is planning to increase its Indian revenue contribution and EBITDA contribution to 40 to 50% in the upcoming 4 years. जो फिलहाल 9 months का अगर हम लोग ये contribution देखते हैं तो revenue contribution has been around 24% and EBITDA is 27% contribution. So this can be increased by a couple of ways. One is that जो existing bed capacity उनकी है, उनकी utilization improve कर सकते हैं. Also last कुछ quarters से काफी सारे hospitals price increase नहीं कर पा रहे हैं, so that will also come in. Also, they also planning to expanding their pharmacies and diagnostics to, and take a home care to boost the demand. So ये सारी चीजें इनको benefit करेंगी upcoming quarters में. Apart from this, in the Middle East, as we know that a couple of their hospitals have not been performing well. So the management is taking a close look. उनको restructure करने की कोशिश कर रहे हैं. Maybe उनको sell करके जो पैसा उनसे आएगा, तो they'll try to evaluate and monetize certain assets which are not performing, and in turn also they'll reduce the debt and increase the payouts in terms of dividend for the company. So we also derive the comfort from Aster's inexpensive valuation. अगर हम देखें तो ये stock is just valued at 7 times FY24 EBITDA, and हमें लगता है कि इसमें बिजनेस स्ट्रैटेजी और स्टेडी फ्री कैश फ्लो जनरेशन के आसार काफी दिख रहे हैं, एंड दिस कैन लीड टू फर्दर री रेटिंग ऑफ द स्टॉक ऑल्सो. सो अगर आप देखें हमारी फेयर वैल्यू 230 रुपए है. सो आज के क्लोजिंग के हिसाब से यहाँ से और 30 to 33% अपसाइड is what we are expecting out of the stock. So hence we have a buy rating on the stock, and that's a pick in this sector. Thank you. Thank you, Purvi. Finally, Sumit, you are up for a discussion on your stock. Thank you. We are recommending buy on HCL Technologies with a fair value of 1,420 rupees, which gives a decent upside. Now, out of all those large IT companies, why we are recommending HCL Tech rather than other at this point in time?
बिकॉज इफ यू सी HCL टेक्नोलॉजी के 3 बिजनेस डिवीजन है. एक IT सर्विसेज जो कि अदर इन्फोसिस से कंपेयर कर सकते हैं या TCS से कर सकते हैं कंपेयर. सेकंड इसका बिजनेस सेगमेंट ER&D बिजनेस है जो कि 16% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है उसको. और थर्ड बिजनेस उसका प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस है. अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि IT सर्विसेज बिजनेस जो इंडिया में ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है, they are growing at 9 to 10% CAGR over next 3 to 4 years. This is what is expected. और इंडियन ER&D जैसे कि इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज है, वो 15 से 16% CAGR से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है. तो IT सर्विसेज विल ग्रो बाय 9 to 10%. They are also growing. बट ER&D बिजनेस जो है उसका वो 15 to 16% CAGR से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years. तो डेफिनेटली इसका ER&D बिजनेस विल ग्रो ड्रास्टिकली. दैट वाज द मेन आइसिंग ऑन द केक. अब ये समझे कि इसका ER&D बिजनेस कितना बड़ा है. इसका ER&D बिजनेस इज इक्वल टू टाटा एलेक्सी को मिला लीजिए, KPIT को मिला लीजिए और LTTS को मिला लीजिए. इन तीनों को मिलाएं तो इसका ER&D बिजनेस बनता है. मतलब ये बहुत बड़ा सेगमेंट है. इसके लिए ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है. ओवरऑल ग्लोबल ER&D स्पेंड जो है वो $1.5 बिलियन एक्सपेक्टेड है. उसमें से आउटसोर्स्ड $126 बिलियन रहेगा. India ER&D business will be around $34 billion और इंडियन ER&D सर्विस प्रोवाइडेड मार्केट विल बी 17 बिलियन. मतलब कहने का 1,700 करोड़ US का इंडिया को अपॉर्चुनिटी है. तो अपॉर्चुनिटी साइज भी बहुत बड़ा है, ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ रेट भी बहुत फास्ट है और इस कंपनी का फोकस काफी स्ट्रांग है. अब इसके पास मैन पावर काफी अच्छे हैं जो कि इस बिजनेस को केटर कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ऑर्डर आए ये फास्ट एग्जीक्यूट कर सकता है. सो हमको लगता है कि अमॉन्ग ऑल लार्ज IT कंपनीज HCL Tech can do really well because of its ER&D business along with its IT services business. हमने इसको सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन बेसिस पे किया है टू जस्टिफाई इट वेरियस सर्विसेज बिजनेस एंड प्रोडक्ट बिजनेस सेपरेटली. तो इससे मालूम चलता है कि दे आर इनटू डिफरेंट एरियाज. तो एक साथ उनको वैल्यूएशन नहीं कर सकते, इसलिए सम ऑफ द पार्ट्स करेक्ट वैल्यूएशन मेथड है इसके लिए. सेकेंडली, इफ यू लुक एट ऑल अदर मेट्रिक्स कि इसका ऑर्डर डील मीन्स कितना है विच इज ग्रोन बाय 46%. स्ट्रॉन्ग डील विंस आर बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग हायरिंग जो कि बताता है कि ऑर्डर भी मिल रहे हैं और एम्प्लॉय भी हायर हो रहे हैं. हेडकाउंट एडिशन इज ए गुड प्रॉक्सी ऑफ डिमांड. Finally, client metrics are healthy. HCL will benefit due to higher ER&D mix and leadership across verticals and services. So we remain positive on HCL Technologies and I hand over to Reni. Thank you, Sumit. Guys, due to time constraint, we will only be able to take a couple live questions. Amit, please share your view on Jubilant FoodWorks. Recently, it has corrected a lot. Yes, Reni, thank you. See, we have an ad rating on Jubilant FoodWorks with a target price of 2850. अगर आप जुबिलेंट का लास्ट फ्यू क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है क्योंकि कंपनी ने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया था अपना प्रोडक्ट्स को. कॉस्ट सेविंग भी बहुत अच्छी थी और ग्रोथ काफ़ी स्टेलर था वॉल्यूम वाइज. और जुबिलेंट हमें ऐसा लगता है कि इज वेल प्लेस्ड टू एक्सेलरेट डोमिनो स्टोर एक्सपेंशन इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. उनका जो डाइवर्सिफाइड ब्रांड्स है लाइक पॉपीज, हॉन्ग्स किचन, एकदम DP यूरेशिया एंड बारबेक्यू, दे आर आल्सो डूइंग वेरी वेल फॉर द कंपनी. Jubilant also continues to do well in terms of digital assets. लेकिन रिसेंटली एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था कंपनी में. उनका जो CEO था प्रतीक पोटा, which has resigned to pursue external opportunities. Mr. Pratik Pota was associated with the company since 2018 and he also laid down the roadmap for ongoing expansion and transition into multi-brand quick service restaurant for Jubilant FoodWorks. और ये एग्जिट ऐसे टाइम पे आता है जबकि कंपनी बहुत क्रूशियली प्लेस्ड थी फॉर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ. तो
ऐसा लगता है कि ये एक थोड़ा सा सेटबैक है और टॉप मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक हो गया है कंपनी का। और इसी के बाद हमारा जो KI है उसने एस्टिमेट्स काटा है बाय 8 to 9% फॉर द नेक्स्ट 2 years। और हमारा जो फेयर वैल्यू है हमने 3365 से घटा के 2850 किया है, बट वी मेंटेन एड रेटिंग ऑन द स्टॉक। The company's management has already commenced a search for a new CEO, and we expect the appointment to happen in the next 2-3 months. And we remain positive on the long-term story of Jubilant Foodworks, and we have an ad rating with a target price of 2850. Thank you, Amit. Next question we have for Purvi. Is Dr. Reddy's a hold post-Russian crisis? अगर रशिया यूक्रेन का ये इशू देखें तो जैसे ये शुरू हुआ था उसके बाद काफी सारे फार्मा स्टॉक्स करेक्ट हुए थे। डॉक्टर रेड्डीज ऑल्सो काफी ऊपर से करेक्ट हुआ है। नाउ another reason why we feel कि there is some more correction that is expected, क्योंकि इनका अगर सेल्स हम लोग देखें तो रशिया यूक्रेन को मिला के ऑलमोस्ट 10% ऑफ their sales comes from this region. As of now, what we had a last interaction with the company, they said कि they are not facing much of an issue, but हमें ऐसा लगता है कि ये अपकमिंग क्वार्टर के नंबर्स में थोड़ा उसका इम्पैक्ट दिखेगा, बिकॉज उनके रिसीवेबल्स पूरी तरह से हेज नहीं है। कुछ पोर्शन हेज किया हुआ है, कुछ पोर्शन इज open, it's not hedged. So we feel there is a little bit of a risk that still is there on the stock, and the stock can see a little bit of more correction from these levels as well. Thank you, Purvi. We now close the floor for Q&A. Shrikant sir, would you like to give some closing comments? Yeah, sure. The way the market has fallen, I think it is like everyone is now asking about where the market will go and what is the next course of action for the market. तो मार्केट की अगर ब्रॉडर ट्रेंड को अगर देखें तो एक बात समझ में आती है कि मार्केट ने काफी अच्छा एक रिबाउंड दिखाया था, और ये रिबाउंड हमने वापस 16,800 के क्रूशियल लेवल्स तक देखा। अगर आपने देखा होगा तो हमने कई बार 16,800 के लेवल्स को मेंशन किया था कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसे क्रॉस करता है तो शायद हम एक बार 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज या तो 17,000 के लेवल्स को देख सकते हैं। लेकिन मार्केट वोलेटाइल रहेगा और डाउनसाइड भी मार्केट के लिए खुली रहेगी। अगर आज के दिन में अगर देखें तो स्पेसिफिकली जो चाइनीज मार्केट में, यानी कि जो चाइना मार्केट में जो एक रिलेंटलेस सेलिंग हमने देखी थी, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 5% चाइना का मार्केट गिरा था शंघाई, और इसी वजह से अगर आप देखें तो पूरे जितने भी एशियन मार्केट थे उन सभी में हमने एक बड़ा डीप कट देखा और इवेंचुअली मार्केट लोअर लेवल्स पे बंद हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो फेड की मीटिंग जो स्टार्ट हो चुकी है, उसमें अगर आप देखें तो हमें लगता है कि बाय थर्सडे वहां पे भी हमें एक बड़ा इम्पैक्ट देखने मिलेगा, और इसी वजह से काफी अनसर्टन फ्लोज के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है, और इसी वजह से मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी आपको दिख रहा है कि काफी अनसर्टन के ट्रेंड के हिसाब से ही वो मूव कर रहा है। तो ब्रॉड अगर एनालिसिस करें और एक ब्रॉड व्यू अगर रखें तो हमें लगता है कि 17,000 यूएस मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, और यहाँ से अगर कोई भी अगर करेक्शन आता है तो 16,400 या 16,300 ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट किसी भी रीजन से अगर 16,200 के नीचे का अगर क्लोज दिखा देता है तो फिर हमें और भी मार्केट में बिकवाली देखने मिलेगी। अदरवाइज हमें लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, और इमीडिएट बेसिस पे अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो क्लोज टू 16,400 हमारी स्ट्रेटेजी कुछ लॉन्ग पोजीशंस लेने की होनी चाहिए, कुछ कॉन्ट्रा बेट्स लेने चाहिए, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स काफी अच्छे लेवल्स तक करेक्ट हो चुके हैं। और हमें लगता है कि जैसे कि क्रूड में एक सेल ऑफ बना है, क्रूड 140 के करीब था, और 2008 या 2010 में जब क्रूड में एक बड़ी रैली हमने देखी थी तब भी क्रूड के जो लेवल्स थे that was around 140 levels. So from 140 levels, it went down to the levels of almost negative. And in this particular current inflationary move, again we saw the levels of 139. So because it is because of multiple reasons, but after hitting the levels of 140, again it is falling back. So one thing is very clear that now the crude has formed double top sort of formation, and till the crude is not crossing 140, we are going to see further more decline in the near term, which is positive for इमर्जिंग मार्केट्स। और इसी वजह से हमें लगता है कि if there is any correction, then close to 16,400
we should look for adding some long bets in the market. That's it. Thank you, Shrikant sir. So, dear viewers, hope you found our webinar useful. If you are curious for more research updates like these, do check out Kotak Securities, Telegram, Twitter, and Instagram channels if you haven't already. Thank you for joining us today. Have a great evening ahead. Thank you. Thank you. Thank you.